Bismillahirrahmanirrahim. SLOs of this lesson are: use conventions and dynamic of groups discussion and interaction to engage in conversation. First, look at the page number 29 of your textbook, vocabulary section here. Rhyming words used in the poem. What are the rhyming words? What is a rhyme? Rhyming words are words that sound the same at the end. Like how? Look at the examples here. Profession, education. Here, the sound of the profession and education are the same here. Shun. The sound of shun here. Profession, education. Look at the second one. Labor, honor. Or. The sound of or here at the end of these two words. Look at the third example. All together, consider. Ter. The sound of ter here. Together, consider. So what you need to do, add 2 more rhyming words with each of the following. We have here 10 words here. You have to find and add more 2 words to each word here. For example, there is a word effort here. You have to add more words which sound same at the end. Effort, It should be sound like R or T at the end. And all the other words too here. Now look at the page number 30. Useful phrases to engage in conversation. Phrases means it's a group of 2 or 3 words. Informal and friendly greeting. Greeting क्या होती है? Hi, hello, how are you? ये हो गया, आपकी greetings हो गई. Informal, friendly. Informal वो होते हैं जो हम अपने दोस्त वगैरह के साथ बोलते हैं. हाय हेलो आपकी ग्रीटिंग हो गई. फिर उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ. आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम. जस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. लुक एट दीज बॉय हियर. फ्रेंडली बिजनेस ग्रीटिंग्स. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. व्हेन मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेन वी मीट द पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम, वी use these words. Pleased to meet you, nice to see you, glad to meet you, it's a pleasure meeting you. Because we are meeting that person first time. Now look at the third one here. How to begin formal conversation. Formal conversation आपकी हो गई जैसे कि आपका कोई बॉस वगैरह, मैनेजर जिसके आप अंडर काम करते हैं, या आपके स्कूल के प्रिंसिपल हो गए, आपकी टीचर होगी. ये क्या है? सारे फॉर्मल हैं. इनके साथ आप वैसे बात नहीं कर सकते जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं. तो उनके साथ हम कैसे बोलेंगे? लुक एट हियर. हाउ डू यू डू, हाउ आर यू, वेरी वेल, फाइन, थैंक यू. नाउ लुक एट द लास्ट वन. व्हेन मीटिंग समवन आफ्टर अ व्हाइल, कुछ वक्त के बाद हम जब किसी से मिले. गुड टू सी यू अगेन, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम. ये क्या है? सारी इधर क्या है? कन्वर्सेशंस के तरीके हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ, कि हमें मुख्तलिफ लोगों से किस तरह बात करनी है. ये तरीके हैं हमारे, और ये नेचुरली हमें आता है. जब हम फ्रेंड से मिलते हैं तो थोड़ा फ्रैंक होके बोलते हैं, अपने पेरेंट्स से कुछ और तरीके से बोलते हैं, टीचर से कुछ और तरीके से. तो क्या है? ये नेचुरली भी होता है. लेकिन यहां पर मैं आपको बता रही हूं कि कन्वर्सेशन के मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ तरीके हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल. नाउ लुक एट द टास्क हियर. सेलेक्ट सम स्टूडेंट टू डू अ रोल प्ले. अ न्यू फैमिली हैज मूव्ड इन योर नेबरहुड. Use the phrases above and greet your new neighbor, both formally and informally. Also introduce yourself and ask for his or her introduction. अब आपको इन चारों तरीकों का तो पता चल गया. अब आपने क्या करना है? एक रोल प्ले करना है. एक न्यू फैमिली आई है आपके नेबरहुड में. अब ये आप पर है कि आप इनमें से कौन सा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप पहली दफा उन नेबर से मिल रहे. न्यू फैमिली आई है, उनको ग्रीट करना है. उनको फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों तरीकों से ग्रीट करना है, और अपना इंट्रोडक्शन देना और उसका भी इंट्रोडक्शन लेना है. नाउ यू हैव लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ इनफॉर्मल और फॉर्मल ग्रीटिंग्स हियर. दिस टास्क विल बी वेरी इजी फॉर यू. दिस इज योर होमवर्क फ्रॉम समर पैक, पेज नंबर 19 हियर. रीड द गिवन स्टैंजा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. टेल which SLO this question has been taken. You have to read this stanza carefully and you have to answer this question and this 4 question here too. You can find the answer of this question from that passage, and
Activity here, meet any laborer in the presence of your parents and ask him his routine problems. Compare this problem with the ones the rich people face. Now give your opinion how these problems of the laborers can be lessened. Lessened? कैसे कम की जाए इनकी प्रॉब्लम्स? ओपिनियन देना है आपने इधर अपना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुन के कि उनकी अब प्रॉब्लम्स को कम कैसे किया जाए, सजेशन भी देना आपने. थैंक यू.